दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि एक बार दिल से ऊंची तालियों की गूंज से हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का स्वागत करें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हम इस भव्य प्रकोष्ठ में बैठे हैं भारत मंडप।
ऑफ डिफेंस से जो आज हमें मिलता है वो आज तक तो भारत के इतिहास में कभी
to pursue self-reliance in the strategically important security
by the Indian Defence Industrial Base to aid the process of indigenous ammunition manufacturing. I request Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, sir, to please launch the indigenization roadmap for armament and explosives. दोस्तों, हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे देश के इतिहास में मंत्रालय की तरफ से ऐसी लीडरशिप, इतनी इंस्पिरेशन और इतना साथ दिया जा रहा है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को, जो आप रोड मैप देख रहे हैं, ये बहुत ही अमूल्य इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन नेवी की ऑर्गेनाइजेशंस का। अब चलते हैं अगले दौर पे, एक्सचेंज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड थर्ड IDEX प्लस भारत सेमी। I'd like to request the CMD of Bharat Electronics, Shri Manoj Jain, and Ms. Vrinda Kapoor, Chief Executive Officer of third IDEX, please join us for the exchange of memorandum of understanding. We shall now have the felicitation of innovators. 7 firms who have signed bulk contracts with the Indian Navy would be felicitated with a certificate, and they would have the honor to pose for a formal group photograph on stage with our Honorable Defence Minister. I will now announce their names in sequence. Vimal Fire Controls, Aeromobic Systems, TSC Technologies, Airbotics Technologies, Sagar Defense Engineering, Optrel India, Adisan Systems, you can see the logos, the brand logos of all these winners on the screen.
दोस्तों, जब हम क्रांतिकारी परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें सच्चाई ये है कि रोज कुछ न कुछ ऐसी उपलब्धियां होती हैं जो हमारे देश के इतिहास में पहली बार हो रही हैं। और अब हम अनाउंस करेंगे हैकाथॉन विनर्स के नाम। To honor the exceptional achievements of some of the brightest minds in our nation, at the inaugural Naval Hackathon, the Indian Navy organized a hackathon a week back on the 22nd of October. This was hosted by the Navy as a part of Swavlamban 2024. The Naval Hackathon united 900 innovators from across India in a mission to solve real-world defense challenges. With 5 complex problem statements at hand, these talented participants put forth their best efforts to bring forward creative solutions that promise to elevate our naval capabilities. Today, we are thrilled to recognize the standout contributions of our winners, whose work embodies both vision and dedication. Put your hands together and let's have the applause flowing for problem statement number 1, speech separation. Ms. Noorin Nasir Kot, a student from IIIT Kota, and Sahasransu Purohit, a professional freelancer. They're the winners of the problem statement number 1, speech separation. Let's move on. Problem statement number 2, drone swarm coordination. Master T. Adbik Vithan, a student from Karunya Institute of Technology and Science, Coimbatore, and Suvranshu Jana, professional from Messrs. Autosky Aerospace. Problem statement number 3. Problem statement number 3 is real-time tracking of flying objects. Master Rishabh Bhattacharya, a student from IIIT Hyderabad, and Mr. Apurva Joshi, a professional from Messrs. Inron Solutions. Problem statement number 4, load balancer on OpenStack. Ms. Sneha, a professional from Messrs. Jupical Technologies, and Alok Kumar Thakur, Petty Officer ELR from the Indian Navy. And finally, problem statement number 5, maritime situational awareness. Commander Dheeraj Khanna, retired, a professional from Messrs. Pythtech. Master Aparesh Kumar, student from Shiksha O Anusandhan, Ranchi. We shall now move on to the next element of the release and launches in this function, the unveiling of IDEX challenges. Aditi 3 consisting of 1 problem statement and DIS 13 consisting of 7 problem statements of the Indian Navy, Indian Army and the Indian Air Force would now be launched
by our chief guest, the Honorable Raksha Mantri of India, Shri Rajnath Singh. May I now request Shri Rajnath Singh, Honorable Raksha Mantri, sir, could you please release the IDEX challenges? The landscape of defense innovation has evolved rapidly, pushing the boundaries of excellence in defense technology. IDEX is accelerating Atmanirbharta in defense by driving critical and next-generation ideas through state-of-the-art innovation. As India augments its position as a global defense power, IDEX remains steadfast in its commitments towards boosting innovative and cutting-edge technologies for our armed forces. Earlier this month, Honorable Raksha Mantri launched Aditi 2.0 and Disk 12 during DevConnect 4.0. Continuing the efforts to make India self-reliant in developing strategic technologies on the occasion of the 3rd Annual Innovation and Indigenization Seminar, Swavlamban 2024. The Indian Navy, together with the Indian Army and Indian Air Force, has partnered with IDEX to unveil 8 challenges in a step closer to Atmanirbhar Bharat. Presenting the 3rd edition of Acing Development of Innovative Technologies with IDEX and the 13th edition of the Defense India Startup Challenge with grants up to 25 crore and 1.5 crore that feature challenges across technology domains such as directed energy weapons, artificial intelligence, military communications, network protocols, cybersecurity and more. Swavlamban 3.0 marks the launch of 8 IDEX challenges. Indian Navy with 3 challenges. Indian Army with 3 challenges. Indian Air Force with 2 challenges. IDEX extends an open invitation to innovators, startups and MSMEs. Pushing boundaries, advancing defense. I now request all the speakers, moderators of the interactive sessions and the plenary session to please step on the stage for a group photograph with our Honorable Chief Guest. ये तो पता ही नहीं था मुझे। And now the final element of release and launches. Ladies and gentlemen, to showcase the technological advancements achieved through innovation by startups, the Indian Navy is launching Sagar Mala Parikrama today. Matangi, an autonomous surface vessel developed by Sagar Defense Engineering, shall embark on a passage to herald the age of autonomous capabilities developed in India. The sea transit from Mumbai to Tuticorin
spans a distance of about 850 nautical miles, equivalent to 1,500 kilometers. The unique aspect of the passage is that Matangi shall transit in autonomous mode. And there she is on the screen, Matangi in autonomous mode without human intervention, using the indigenously developed navigation and collision avoidance software. दोस्तों वीडियो देख के मेरी तो सांस रुक रही है, आप लोग सांस रोक रही है. This is Matangi. Can you imagine an autonomous surface vessel going to travel 1,500 kilometers across the Indian Ocean without human intervention? May I now request our Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh Ji, sir, please flag off the mission, Sagar Mala Parikrama. Ladies and gentlemen, our Honorable Raksha Mantri will be flagging off the mission with Flag November. And you're now watching the live stream coming from Mumbai. This is the live stream. Matangi is ready. And there she goes. A historic moment for the Indian Navy, a historic moment for the Indian defense industry, and definitely a historic moment for Mother India. That's the live stream coming to you from Mumbai. This vessel is going to go around the coast of India from Mumbai to Tuticorin without human intervention. लंबी सांस लेके एक बार जोरदार तालियां हो जाए. क्या बात है. Congratulations to the Indian defense industry for this golden milestone. मैं अब हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, से निवेदन करता हूं, श्रीमान कृपया सभा को संबोधित करें. मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इस कार्यक्रम के मॉडरेटर शरद चंद्र सिन्हा के लिए एक बार तालियां हो जानी चाहिए. और अच्छी तरह मॉडरेट, एक्सेलेंट मॉडरेशन. एडमिरल डीके त्रिपाठी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, त्रियार के सिंह, Defense Secretary Designate Dr. Samir V. Kamath, Secretary DDR&D and Chairman DRDO, Baba Kalyani, Chairman and Managing Director Bharat Forge, Lieutenant General J.P. Matthew, CISC, Vice Admiral K. Swaminathan, VCNS, Sri R.S. Bhatia, President, SIDM, and former Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, senior officials, industry representatives, and innovators, मीडिया के मित्रों, देवियों व सज्जनों. इंडियन नेवी द्वारा आयोजित स्वावलंबन इवेंट में आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है. मैं इंडियन नेवी को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर स्वावलंबन का आयोजन करने पर अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं. आपने इस आयोजन की थीम स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन रखी है. मैं समझता हूं
कि यह न केवल वर्तमान की परिस्थितियों के लिहाज से रेलेवेंट है, बल्कि यह भविष्य के भी आपके प्रयासों को दिशा देने में निश्चित रूप से मदद करेगी। इसलिए मैं पुनः आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे सभी स्टेक होल्डर्स को तथा इसमें शामिल विभिन्न कॉम्पिटिशन्स के विनर्स को भी बधाई देता हूं। पिछले 2 वर्षों में आप सबके सामने हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो भी चैलेंजेस रखे, आपने उन्हें पूरा किया है। आपने जिस प्रकार से हमारी सेनाओं को अनेक टेक्नोलॉजी दी, उसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि यह इवेंट आपके, हमारी सेनाओं के और पूरे देश के साइंटिफिक हॉरिजन को और वाइडन करेगा। साथियों, इस इवेंट में आप जो भी इनिशिएटिव शुरू कर रहे हैं, वह चाहे स्वावलंबन डॉक्यूमेंट को रिलीज करना हो, आईडेक्स चैलेंजेस की अनवीलिंग हो, हैकाथन अवार्ड हो या फिर सागर माला परिक्रमा की शुरुआत हो, यह सब इस बात को दिखाते हैं कि डिफेंस सेक्टर में इंडिजिनाइजेशन, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर आप सभी कितने सक्रिय और सजग हैं। आत्मनिर्भरता को लेकर इंडियन नेवी का प्रयास बेहद सराहनीय है। मैं कई मौकों पर और कई मंचों से इंडियन नेवी की इस बात को लेकर तारीफ भी कर चुका हूं। मेरी दृष्टि में इंडियन नेवी एक प्रकार से इनोवेटिव नेवी है। इनोवेशन और आत्मनिर्भरता के प्रति आपका संकल्प आपके द्वारा कराए जा रहे इस कार्यक्रम में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मैंने भी कुछ देर पहले यहां लगी एग्जीबिशन को विजिट किया। उसमें मुझे जो टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स दिखाए गए, वे मन में यही विश्वास पैदा करते हैं, मन में यह भरोसा पैदा करते हैं कि आने वाले समय में आप सभी इनोवेशन और टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में एक लंबी दूरी तय करने वाले हैं। मुझे बताया गया कि आज आप सब ने फ्यूचर वारफेयर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम के ऊपर सेशंस भी आयोजित किए हैं। मैं यह भी देख पा रहा हूं इस बार के इवेंट में पिछले 2 इवेंट्स की तुलना में ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई है। ये सारी चीजें यह दिखाती हैं कि देश में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को लेकर एक वाइब्रेंट कल्चर डेवलप हुआ है। साथियों, भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बढ़ती हुई गति को मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। इस बात की पुष्टि मैं इस प्रकार से कर सकता हूं कि पिछले सिर्फ 15 दिनों में ही मैं लगभग 3-4 ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले चुका हूं जो इन विषयों से संबंधित रहे। चाहे वो SIDM का कार्यक्रम हो, TDF का कार्यक्रम हो या फिर डेफ कनेक्ट हो, यह फ्रीक्वेंसी अपने आप में इस ओर स्पष्ट इशारा करती है कि भारत में अब इनोवेशन की एक लहर चल रही है। साथियों, आज मैं पूरे देश भर में डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर जो एक्साइटमेंट देख पा रहा हूं, वह अनपैरेलल्ड है। ऐसा मुझे पास्ट में कभी देखने को नहीं मिला है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के इतिहास में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस के कई दौर आए हैं, पर इन चेंजेस ने डिफेंस प्रोडक्शन इकोसिस्टम को ज्यादातर बाईपास ही किया है। 90s के डिकेड में जब कंप्यूटर रिवॉल्यूशन आई थी तो पूरा समाज उससे प्रभावित हुआ, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भी जब मार्केट में कैपिटल का फ्लो बढ़ना प्रारंभ हुआ, तब भी पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिला। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, तब भी हर क्षेत्र में क्रांति आई, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा। मतलब ऐसे अनेक अवसर आए जब भारत में डिफेंस सेक्टर को लेकर एक इनोवेटिव कल्चर डेवलप हो सकता था, लेकिन कुछ कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। जो सबसे बड़ा कारण मुझे इसके पीछे दिखता है वह यह है कि हम एक लंबे समय तक इंपोर्ट डिपेंडेंट देश रहे हैं। हम आर्म्स और इक्विपमेंट को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा
निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडियाज जन्म ही नहीं ले पा रहे थे। अगर कभी आइडियाज जन्म भी लें तो उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए हमारे पास जैसा एक कम्प्रिहेंसिव सिस्टम होना चाहिए था, वह कम्प्रिहेंसिव सिस्टम भी नहीं था। पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कमिटमेंट दिखाई वह आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रही है। यह माननीय प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का यह परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों में स्थितियों में तेजी से सुधार हुआ है। आज हमारे पास कॉन्क्रीट इकोसिस्टम भी है और आज हम सेल्फ रिलायंस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, वह यह है कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की भी उतनी ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं तो यह मानता हूं कि यह प्राइवेट सेक्टर की भूमिका और आगे तेजी से बढ़ने वाली है। जो कॉन्फिडेंस इस समय मुझे प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिला है, आज के कुछ वर्षों पहले वह कॉन्फिडेंस नहीं था। हमारी सरकार ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। डिफेंस सेक्टर में हमारा पब्लिक सेक्टर तो पहले से ही इन्वॉल्व था, लेकिन हमने इस बात को समझा कि आखिर एक पंख पर कोई पंछी कितनी दूरी उड़ सकता है। सरकार में आने के बाद हमने डिफेंस सेक्टर में दूसरे पंख को भी मजबूत किया, यानी हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को मजबूत करने का भरपूर प्रयास किया है। साथियों, आप इसी तरह हमारे डीपीएसयूज को देखें। हमारे डीपीएसयूज आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने तो अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अभी हाल में ही महारत्ना का स्टेटस प्राप्त किया है। आज सुबह ही मैंने कई डीपीएसयूज की परफॉर्मेंस का रिव्यू किया है और मैं आपके सामने यह बेहद खुशी के साथ कह सकता हूं कि मैं डीपीएसयूज के परफॉर्मेंस से काफी संतुष्ट हुआ हूं। लेकिन मैं इस मंच से प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ अपनी डीपीएसयूज से भी यह आह्वान करूंगा कि आप लोग भी कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन के दम पर लगातार नई नई ऊंचाइयां हासिल करने की कोशिश करें। और आज की मीटिंग में भी मैंने उनसे यही आग्रह किया है। साथियों, प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए हर वह प्रयास कर रही है सरकार जो आवश्यक है। जहां जरूरत पड़ी प्राइवेट सेक्टर को कैपिटल प्रदान किया, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म दिया, उनके लिए नॉर्म्स को भी जितना आसान बनाया जा सकता है उसे आसान बनाने की कोशिश की है। आज प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इनोवेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप सबको पता है कि आज हम अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। आज हमारे सारे प्रयास धरातल पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथियों, हमारे इन सम्मिलित प्रयासों का परिणाम सिर्फ यही नहीं है कि हम भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं। हमारे प्रयासों का परिणाम सिर्फ यही नहीं है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर डिफेंस सेक्टर में स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि पूरे भारत में साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फाइनली सेल्फ रिलायंस एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया, एक क्रांतिकारी विचार यह बनकर उभरा है। यह विचार तेजी से प्रसारित भी हो रहा है। यह विचार हम सब भारतीयों के अंदर एक विश्वास भी पैदा कर रहा है कि हम अपने दम पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। साथियों, आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में देखें तो हर कार के पीछे कोई न कोई एक आइडिया छुपी होती है, चाहे वो पॉलिटिकल, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो या फिर कल्चरल ही क्यों न हो। पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी बड़ा डेवलपमेंट यदि हुआ है तो उसके पीछे कोई न कोई आइडिया ही विशेष रूप से जिम्मेदार रही है।
बिना आइडिया के चेंज कभी नहीं आ सकता है। हालांकि नए विचार आसानी से एग्जीक्यूट भी नहीं होते हैं और विचारों को अनेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बावजूद उसके विचारों में अगर ताकत होती है तो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए सामने आ ही जाता है। साथियों, इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां किसी बड़े आइडिया को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, बावजूद इसके वह आइडिया पूरे दमखम के साथ समाज के सामने आई है। इस संबंध में मुझे गैलीलियो गैलीली का उदाहरण याद आ रहा है। आप सब गैलीलियो के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने यूरोप को यह बताया था कि सोलर सिस्टम यह पृथ्वी केंद्रित नहीं बल्कि यह सूर्य केंद्रित है। उन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। उससे पहले यूरोपियन यही मानते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों के लिए यह आइडिया अपने में नया था। नए विचार से डरने वाले लोगों ने इस आइडिया को दबाने का भरपूर प्रयास किया। इसी क्रम में गैलीलियो को सजा भी हुई थी। बर्तोल्ट ब्रेख्ट का एक नाटक है, लाइफ ऑफ गैलीलियो। बर्तोल्ट ब्रेख्ट के उस नाटक में इस बात का भी जिक्र है कि जब उन्हें सजा सुनाई जा रही थी तो उनसे माफी मांगने को कहा गया और उनसे यह कहा गया कि यदि तुम मान लो कि सोलर सिस्टम पृथ्वी सेंट्रिक है, अर्थ सेंट्रिक है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। गैलीलियो उस समय मन ही मन मुस्कुराते हैं। कई बार मैं सोचता हूं कि स्टेज पर इस सीन को कैसे प्ले किया गया होगा। गैलीलियो मन ही मन मुस्कुराते हैं और सोचते हैं कि यदि मैं यहां मान भी लूं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, फिर भी सूरज का चक्कर लगाएगी तो पृथ्वी ही लगाएगी। मेरे माफी मांग लेने से यह सच झूठ तो नहीं बन जाएगा। मेरे माफी मांगने से यह आइडिया तो दब नहीं जाएगी। और आप देखिए कि आज पूरी दुनिया साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ यह मान लिया है कि सूर्य पृथ्वी की नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। साथियों, इसी प्रकार मुझे फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी एक उदाहरण याद आता है। उस क्रांति के दौरान लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के आइडिया को दबाने का बहुत ही प्रयास किया गया था, लेकिन क्या यह आइडिया दब पाई? फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से निकला हुआ स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार पूरी दुनिया में लोकतंत्र की यह नींव बन गया। भारत का स्वतंत्रता संग्राम भी इससे अछूता नहीं रहा है। स्वतंत्रता की हमारी आकांक्षा को भी दबाने का पूरा प्रयास किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को तो दबाया ही गया, उससे पहले भी कई सारे छोटे बड़े विद्रोह देश के अलग अलग हिस्सों में दबाए गए अथवा उन्हें दबाने की कोशिश की गई, लेकिन इससे स्वतंत्रता की हमारी जिजीविषा, हमारे दिल की तड़पन वह कम तो नहीं हुई। जब उस विचार का उचित समय आया तो पूरे देश में स्वतंत्रता की एक लहर सी चल पड़ी। एक ऐसी लहर, एक ऐसा आइडिया जिसे अंग्रेज दबा ही नहीं पाए, और यह एक विचार था जिसे दबाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यह वह विचार इतना मजबूत था कि उसे दुनिया के सामने आना ही था। साथियों, अंग्रेजी का एक फ्रेज है, आप सबने सुना भी होगा कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यदि मैं हिंदी में इसे कहूं तो मुझे इस पर साहिर लुधियानी साहब का एक शेर याद आता है। वह कहते हैं, हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, यहां वर्क गिरने का अर्थ होता है बिजली गिरना। हजार वर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साथियों, आइडियाज के साथ भी यही होता है। जब उसे सामने आना होता है तो किसी भी प्रकार से सामने आएगी ही, उसे कोई रोक नहीं सकता। भारत में भी अब यही हो रहा है। इनोवेशन और सेल्फ रिलायंस का आइडिया अब भारत में खिल चुका है। हम सब ने मिलकर
अपने कार्यों से भारत में इस आइडिया को जगाया है, युवाओं में इस चेतना को जगाया है। अब जब यह चेतना जग चुकी है तो यह सेल्फ प्रोपेल्ड इंजन की तरह काम करेगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। यह हमारे युवाओं का ही इनोवेशन है कि आज भारत में 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स हैं, इनमें भी 100 से अधिक तो यूनिकॉर्न्स हैं। कई सारे स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बेहद बड़ी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारे युवाओं ने इस आइडिया को स्वीकार किया है कि वह इनोवेशन के माध्यम से हमें आत्मनिर्भर बना सकते हैं। साथियों, एक और बात जो मेरे जेहन में काफी समय से चल रही थी, उसकी भी चर्चा मैं यहां आप सबके सामने करना चाहूंगा कि यहां आर्म फोर्सेस द्वारा दिए गए चैलेंजेस के कई सारे विनर्स भी बैठे हुए हैं। मैं विशेष रूप से उनसे एक बात कहना चाहता हूं। अब तक आपने जो भी किया वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहा है। हम आपको अपनी समस्याएं बताते हैं, उन समस्याओं पर आधारित चैलेंजेज आपको देते हैं और आपने अब तक उन समस्याओं का निदान करते हुए उन चैलेंजेज को पूरा भी किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया, नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। यह बात सही है, लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मैं यह भी सोचता हूं, क्या हमें उस टाइम का इंतजार करना पड़ेगा कि कब टाइम आएगा, फिर आइडिया आएगा और हम उस पर काम करेंगे? हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। हमें अपने पुरुषार्थ से वह समय स्वयं ही लाना होगा। आइडियाज का समय आता नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वह समय हमें लाना पड़ता है। इसलिए अब हमें इससे भी कहीं आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। मतलब अब आपको ऐसी चीजें डेवलप करनी होंगी जिसकी अभी हमें आवश्यकता तो दिख नहीं रही है, लेकिन वह चीज वास्तव में डेवलप होने के बाद हमारे लिए आवश्यकता बन जाएगी। जब आपको ऐसे ऐसे आइडियाज लाने हैं जो हमारी जरूरत बन जाएं, सर्विसेज को ऐसा लगे कि आपके इस इक्विपमेंट के बिना तो अब तक हम अधूरे थे, इसे मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाना चाहूंगा। साथियों, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स में एक बात कही गई है कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी डेवलप होती है, उसमें मनी एक्सचेंज का स्वरूप भी स्वाभाविक रूप से बदलता जाता है। जैसे पहले के समय में आप देखें तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हुआ करता था। फिर जैसे जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी है, मॉनेटरी एक्सचेंज की व्यवस्था आई है। फिर जैसे जैसे कंट्रीज डेवलप होती गई, वहां क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीजें भी हमें देखने को मिल रही हैं। यानी धीरे धीरे कैश का प्रचलन कम होता गया। परंतु यदि मैं भारत की बात करूं तो हमने इससे भी एक कदम आगे बढ़ते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रूप में एक डिसरप्टिव एंट्री की है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जैसी चीजों तक तो हम पहुंचे ही थे, लेकिन एक तरफ जहां दुनिया वहीं पर रुक गई, हमने वहां से लंबी छलांग लगाते हुए डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मूव किया और ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया के लिए यह अपने में एक मिसाल बन गया है, दुनिया के लिए अपने में एक एग्जाम्पल बन गया है। साथियों, आज दुनिया के कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज्यादा हमारे यहां डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना हो रहा है, उसका मोर देन 45% ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। आज भारत डिजिटल पेमेंट के वैल्यू के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश बनकर हो रहा है। आज देश के किसी भी कोने में बड़े से बड़ा माल से लेकर सब्जी और चाय के ठेले तक पर आप अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसके अनुसार सिर्फ पिछले सितंबर महीने में ही यूपीआई से 1.5 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसकी टोटल वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। यह अपने आप में मैं मानता हूं एक रिकॉर्ड है। आज दुनिया के कई देश
हमारे इस आइडिया को अपनाने की बात करते हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हमने इस डिजिटल ट्रांजैक्शन के आइडिया के धरातल पर उतरने का इंतजार नहीं किया है, बल्कि हमने वक्त को अपनी ओर खींचा और इस आइडिया को इंप्लीमेंट किया है। इसी प्रकार आप जैम ट्रिनिटी के रूप में एक और उदाहरण देखिए। आज भारत में जनधन, आधार और मोबाइल के एकीकरण ने गवर्नमेंट स्कीम्स की डिलीवरी को बहुत ही आसान बना दिया है। जनता सीधे मोबाइल के माध्यम से सरकार से जुड़ पा रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रही है, सरकारी और अब आपको गैस सिलेंडर के लिए लाइन भी लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि मोबाइल के एक क्लिक से गैस सिलेंडर खुद आपके घर आता है। अब देश के लोगों तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ पहुंच रहा है। यह सब जैम ट्रिनिटी के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप इनोवेशन के माध्यम से आइडियाज और समय के आने का नहीं, बल्कि उसे लाने का प्रयास करिए। सही समय का इंतजार नहीं करना होता है, बल्कि अपने पुरुषार्थ से सही समय लाना पड़ता है। आप लोग पूरी तरह से सक्षम हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी मेहनत और अपने नवाचार के दम पर भारत के लिए वह समय ला कर रहेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मुझे आप सबकी मेहनत, लगन और स्वावलंबन इस इवेंट में भी देखने को मिल रही है। साथियों, मुझे बताया गया कि स्वावलंबन के पिछले 2 सत्रों में इंडियन नेवी के इंडियन इंडस्ट्रीज की तरफ से 2000 से अधिक प्रपोजल्स आए हैं। इन प्रपोजल्स को 155 चैलेंजेस में कन्वर्ट किया गया है और 171 कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करने में सहयोग देंगे। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वावलंबन इनिशिएटिव ने IDEX के तहत 213 MSME और स्टार्टअप के साथ भी सहयोग किया है, जिसके तहत अब तक 19 केसेस में 2000 करोड़ से भी ज्यादा के एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON दिए गए हैं, जिनमें से 784 करोड़ रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट पूरे भी हो गए हैं, ऐसा मुझे बतलाया गया है। साथियों, आज हमें इस बात की संतुष्टि होती है कि हम सबने मिलकर जो भी प्रयास किए हैं वह सफल हो रहे हैं। मैं इस मंच से आप सबको आश्वासन भी देना चाहता हूं कि आगे भी जब आवश्यकता पड़ेगी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। आप और हम मिलकर भारत को हर क्षेत्र में स्वावलंबन प्रदान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा प्रयास इसी तरीके से भविष्य में भी जारी रहेगा। मैं इंडियन नेवी को स्वावलंबन के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और विशेष रूप से एडमिरल दिनेश त्रिपाठी जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, कि पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं और एक बार फिर से यहां उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स और विनर्स को उनके भविष्य के लिए ढेर सारी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से इस इवेंट की कामयाबी के लिए प्रार्थना करता हूं और अंत में आप सभी और आपके परिवारजनों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह किसी भी समारोह में आकर सभा को संबोधित करते हैं, तो आप सब मेरी बात से सहमत होंगे कि हमारे दिलों की धड़कन तेज हो जाती है, हमारे दिलों में आत्मविश्वास और प्रेरणा की भावना जाग जाती है। सर, सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करना मेरा कर्तव्य है और सच्चाई यह है कि जब आप किसी भी समारोह में आते हैं तो आप सभी जनों को देखते हैं, आप सबको देखते हैं, लेकिन हम सब की नजरें आप पर होती हैं, क्योंकि हम सबको आपकी आंखों में मर्यादा, उदारता और प्रेरणा का सागर दिखता है। यही सच्चाई है। सत्यमेव जयते। I now request
Vice Chief of the Naval Staff, Vice Admiral Krishna Swaminathan. Sir, could you please present the vote of thanks? Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Chief of Army Staff General Upen Dwivedi, Air Chief Marshal A.P. Singh, Chief of Air Staff, Lieutenant General retired Dushyant Singh, DG Class, General V.K. Singh, former Foreign Minister, Government of India, General J.J. Singh, General Narawane, former Air Chief, General Manoj Pandey, former Army Chief, Srimati Meenakshi Lehi, this is the former Minister, Government of India, or all the present senior officials, distinguished speakers and guests. It is an honor for me to be present among all of you at the Chanakya Defense Dialogue today. First of all, I extend my many congratulations to the Indian Army and the Center of Land Warfare Studies for this important initiative. Before I speak on the topic given to me for today's session of the Chanakya Defense Dialogue, I would like to begin by sharing a recent significant development that underscores the importance of defense dialogues on the global stage. India and China have been involved in talks both at diplomatic and military levels to resolve their differences in certain areas along the LAC. Pursuant to the talks, broad consensus has been achieved to restore ground situation based on the principles of equal and mutual security. The consensus achieved includes patrolling and grazing to traditional areas. This is the power of engaging in continuous dialogue because sooner or later solutions will emerge. And I think there is no better place to highlight this power of dialogue than this platform of Chanakya Defense Dialogue. Friends, the topic on which I have been asked to speak today is India's vision for development and security. I consider this is a challenge as well as an opportunity. It is a challenge because the subject is broad and multifaceted, touching on historical, economic, and strategic dimensions that are difficult to fully summarize in a single discussion. Yet, it is also an opportunity to engage in a meaningful dialogue with esteemed experts and thinkers like you, and especially so with the participation of our friends from various foreign countries. I am pleased that you have named this defense dialogue after Acharya Chanakya. Whenever we discuss the economy and the security, Acharya Chanakya stands before us as one of India's greatest thinkers. We all know about his book, Arthashastra, which, although written on political systems, also incorporates many elements of development and security. The English literal translation of the Chanakya's famous book, Arthashastra, is economics. So I will begin by talking about economics. I would like to draw your attention to an interesting fact about the origin of the word economics. Some of you might know that this word originates from oikonomio, which comes from two words, oikos, meaning household, and nomoi, meaning rules or laws. Simply put, it refers to the rules created for managing a household. Long before the rise of capitalism and the commercial economies, the household was the center of economic activities, and all economic activities revolved around it. Over time, with the sociometrical changes, the center of the economy shifted from household to society and later to the nation, and today we talk about international or global economy. Throughout history, whether in pre-capitalist society or modern times, one of humanity's primary endeavors has been
to increase and strengthen its military welfare. Even the father of the modern economics, Adam Smith, defined economics as the science of wealth. As society has advanced economically, new sectors and technologies have played a significant role in shaping development. Initially, agriculture was the cornerstone of the economy, representing the primary sector. However, the Industrial Revolution, the manufacturing sector emerged as a key driver of growth. Later, the service sector gained prominence, particularly in the 20th century. In today's technological era, advancement in computer information technology, satellite communication, and now artificial intelligence and quantum computing are transforming the global economy. These innovations, along with other complex economic forces, have created a highly interconnected and dynamic economic landscape. Despite these complexities, it is clear that the global economy continues to advance at an unprecedented pace. Friends, today, nearly every sector plays a role in both driving and responding to economic development. However, this development has been uneven across different regions and sectors. Throughout history, we have faced numerous challenges, including famines, wars, and pandemics, which have disrupted progress. And despite these setbacks, a review of the history shows that we have made significant strides since the onset of modern economic development, particularly since the Industrial Revolution. This progress is evident in improved living standards, technological advancements, and increased global interconnectedness. Historically, the study of key factors for the economic development, such as land, labor, capital, and entrepreneurship, has been central to economic analysis. Their contribution to economies and the cause and effect relationship between the various economic forces have been thoroughly examined. However, the impact of defense and security on economic development has traditionally been underexplored. This may be because security is often viewed as a necessary but non-economic factor, while there have been studies on the economic effects of wars and conflicts. In peacetime, the role of the security sector in influencing economic development has received comparatively less attention. Nevertheless, defense spending, military infrastructure, and national security can significantly affect economic growth and resource allocation even in non-war periods, foreign or in peacetime. Friends, it is ironic that while the importance of the security and economic development has always been acknowledged, it has not been consistently recognized as a direct factor in economic growth. A significant portion of any nation's budget is dedicated to security, as economic development can only flourish when national security is ensured. Moreover, the security sector itself makes a vital economic contribution through job creation, technological advancements, and infrastructure development. Yet its role in driving economic growth has often been overlooked in traditional economic analysis. I believe that the critical relationship between development and security has not yet been given the attention it deserves. These two concepts are often viewed from separate perspectives and are rarely considered together. However, I disagree with this approach. In my view, development and security are deeply interconnected and mutually reinforcing. Over the years, our government has made conscious efforts to bridge the gap between the two, recognizing that sustainable development is only possible when security is ensured and vice versa. Let me offer some examples to illustrate this point.
security is often associated with border protection. When we think of security, image of soldiers stationed at borders, aircraft patrolling the skies, and naval ships guarding the seas typically come to mind. However, as you all know, security extends far beyond border defense. It is a broad and multifaceted concept that encompasses many other factors, including internal stability, economic resilience, and the protection of the critical infrastructure, all of which are essential to the nation's overall security framework. Friends, for example, when we construct roads in border areas, they are typically viewed through the lens of enhancing border security. However, their impact goes far beyond military purposes. These roads are vital for the socio-economic development of the region, improving connectivity and providing local communities with greater access to health care, education, and markets. This, in turn, elevates the quality of life and fosters economic growth. Similarly, when we manufacture arms and defense equipment domestically, it strengthens not only our security infrastructure, but also multiple sectors of the economy. It creates employment opportunities across a wide range of industries, from manufacturing to logistics. Engineers, scientists, and researchers find platforms to apply and further their expertise, leading to technological innovation and self-reliance. Additionally, domestic production boosts income generation and stimulates economic activity through supply chains, creating a ripple effect that benefits the entire economy. In essence, initiatives in the name of security often serve as powerful catalysts for broader national development. Friends, we must critically reassess why pivotal sectors like defense are not given greater prominence in the discourse around economic development. In many conversations about developmental economics, the focus tends to shift towards sectors that, while undeniably important, do not exert the same level of the far-reaching influence as defense and security. Defense, with its vast infrastructure, technological advancements, and employment opportunities, significantly shapes the economy, driving innovation, creating jobs, and safeguarding national interest. Its impact extends far beyond security alone, playing a crucial role in economic stability and long-term growth, which warrants a more central position in developmental discourse. Defense spending drives technological innovation, creates jobs, and stimulates various industries, yet to receive comparatively little attention in traditional economic studies. I am not certain whether colleges and universities widely offer courses in defense economics. If they do, that is a step in the right direction. If not, there is a clear need to introduce and expand academic focus on this field. Understanding the economic dynamics of the defense can provide a valuable insights into how this sector contributes to national and global economic development, helping us to integrate it more fully into our economic frameworks. If defense had been recognized as an integral component of development and studied more comprehensively in the past, India might have achieved self-reliance in the defense sector much earlier. The prolonged dependency on imports can be attributed, in part, to the lack of a coordinated approach between defense and development, and consequently, while our defense industry missed out on critical opportunities for growth and innovation, a significant portion of our defense budget has flowed into other economies,
limiting our ability to strengthen our own capabilities. Addressing this disconnect is essential for fostering a robust domestic defense industry that can contribute to national security and economic independence. Since the advent of our government under the leadership of Honorable Prime Minister, we have focused on achieving self-reliance in the defense sector. The outcome of this effort has been the ability to directly link our defense sector with India's development. Friends, India has a distinctive vision regarding development and security, which has made self-reliance in defense a prominent national goal. When we discuss transforming India's defense sector into a self-reliant entity, we recognize the far-reaching ripple effects of such economic interventions. These include boosting income, creating jobs, advancing manufacturing, fostering research and development, establishing supply chains, and enhancing overall resilience. These impacts not only strengthen our national security, but also stimulate our economy. Consequently, we are committed to pursuing a coordinated approach that integrates security and development, ensuring that progress in one area and fuels advancements in the other. Friends, at this point, I would also like to emphasize another crucial point. As I mentioned earlier, we should not regard the defense sector as a separate, non-economic component of overall development. Moving forward, it is essential to examine the impact of this significant sector on key economic indicators such as income generation, employment creation, regional economic balance, manufacturing growth, investment, research and development, and the expansion of the service sector. Understanding these dynamics will provide valuable insights for policy formulation, enabling us to create strategies that leverage the defense sector as a catalyst for broader economic progress. Friends, when India speaks of self-reliance, it is important to clarify that this doesn't imply working in isolation from the global community. Instead, as we pursue our goal of self-reliance, we remain dedicated to fostering an equitable and inclusive world order. Today, we have representatives from the numerous friendly nations present here, and I want to assure you that India is committed to collaborating closely with all nations to promote a fair and just international system. Our journey towards self-reliance is not a step toward alienation. Rather, it marks the beginning of a new chapter characterized by collaboration and partnership with the global community. We believe that the self-reliance will empower us to contribute more effectively to international efforts, share our expertise, and engage in meaningful exchanges that benefit all. Together, we can build a stronger, more interconnected world that respects the sovereignty and aspirations of every nation on equal terms. Friends, although this topic is vast and could be discussed for hours, I have shared some of my thoughts with you regarding our national efforts and how we are striving to advance development and security together. In terms of national security, it is essential to regularly assess policies and challenges. Timely analysis helps us identify shortcomings and provides new perspectives on various issues. Today's defense dialogue will undoubtedly offer us such an analysis, allowing us to further strengthen our security system. Friends, the coexistence of security and development is not a simple matter. It requires extensive studies, analysis, and planning. I am pleased to see that the dialogue is addressing various important issues, including geopolitical dynamics, economic development,
strategies, environmental sustainability, and more. I believe that such intellectual discourse will help broaden our horizons and lead to a sound policy inputs for us. Acharya Chanakya once said, "Kare puruskarena lakshyam sampadhyati," which translates to work get accomplished when men are determined to achieve the goal. Again, I would like to repeat it. Work gets accomplished when men are determined to achieve the goal. So, let us all resolve to put our full strength into accelerating both security and development. I congratulate Lieutenant General Dushyant Singh, Director General of CLAS, for this initiative. The way you have organized this conference to consider security and development together is commendable. I am particularly happy to notice that very relevant and contemporary issues this dialogue is taking up for deliberation. I am confident that through this conference, you will emerge with ideas that will accelerate both our security arrangements and our development. I wish this conference great success. Thank you for inviting me, and I conclude my remarks here. Thank you very much. Jai Hind.